Hello everyone. My name is Kunal, and I'm your mathematics tutor. And actually, we are doing application of integral, जिसमें हमने अभी तक 8 इंटीग्रल की एप्लीकेशन हमने देख चुका है, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इंक्लूडेड. जिसमें हमने पहला देखा था एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल वैल्यू. सो लेट मी टेल यू हमने क्या क्या करा है. तो हमने पहला क्या देखा था, एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल वैल्यू. एंड देन हमने उसमें 3 केसेस देखे थे. फिर हमने क्या देखा था, हमने देखा था एस्टिमेशन ऑफ एनी फंक्शन वैल्यू. एंड देन देखा था डिटर्मिनेशन ऑफ एनी फंक्शन. एंड देन देखा था डिफरेंशिएटिंग एंड इंटीग्रेटिंग सीरीज. तो ये सारी चीज हमने अभी तक कवर कर रखी है. सो टुडे इज आवर लेक्चर नंबर 4 एंड वी आर एक्चुअली गोना डू area. Okay, so let me start the today's topic. Okay, so let us start our today's lecture, which is lecture number 4, which is mostly based on our topic area. So today we are going to start our new application of integral, which is actually area जो हमने geometrical interpretation of definite integral के first lecture में हमने देख रखा है. So let me try to start with some topics. So our first topic is we have to find like area. देखो एरिया तो सभी लोग फेमिलियर हो, क्योंकि मैंने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में बता रखा है. सो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं ना, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सीधा केसेस देखेंगे. वी आर नॉट गोइंग इन डीप बिकॉज हमने पहले ही कवर कर रखा है डेफिनेट इंटीग्रल के फर्स्ट लेक्चर में. सो अगर आपको एरिया के बारे में और भी चीज जाननी है तो आप वहां जाके देख सकते हो. यहाँ पे अपन बस उसकी एप्लीकेशन देख रहे होंगे, उसके केस वाइज एप्लीकेशन देख रहे होंगे कि अगर इस तरह के केसेस हैं तो कैसे अप्रोच करते हैं. एंड the next thing, yeah, so let me tell you how to do that. So our area bounded, like we have to do the area bounded by, so let me tell you the area bounded by the curve, y is equal to f of x with x-axis. So this is our first case, right? We have to find the area bounded by the curve in y is equal to fx with x-axis. So let me tell you हमें क्या करनी है. So there will be the first area bounded. देखो ये सारी चीजें हमने फर्स्ट लेक्चर में देख रखा है डेफिनेट के, तो आई एम जस्ट गोइंग बाय द केसेस. एंड मेरा मेन एप्लीकेशन होगा कि इसमें केस वाइज जितने भी ज्यादा केस मैं आपको दिखा सकूं. ओके, सो y is equal to fx and x-axis, right? And the straight line, x is equal to a and x is equal to b is given by. So we have to find the this is the first case, right? This is the first case in which we are doing like the area bounded by the curve y is equal to fx with the x-axis. But यहाँ पे cases क्या दी हुई हैं, यहाँ पे cases दी हुई हैं the area bounded by y is equal to fx and the x-axis कहाँ से कहाँ तक हमें करनी है. तो we have to find the area between the straight line x is equal to 8 and x is equal to b. So let me try to first draw the graph of y is equal to fx. So let me draw here. So there is like x-axis, there is my y-axis, and let us assume this is our something graph look like y is equal to fx. And you all know that, and let us suppose this is our x is equal to a line. And this is our x is equal to b line. I mean, this coordinate is a comma 0 and this coordinate is b comma 0. So we have to find the area. Let me first think हमें कौन सी एरिया निकालनी है. तो हमें ये कर्व एंड एक्स एक्सिस, दिस इज आवर एक्स एक्सिस के बीच के एरिया, एंड एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी के बीच की एरिया. सो अपन को ये एरिया फाइंड करनी है. एक्चुअली वी हैव टू कैलकुलेट दिस एरिया. नॉट नीचे नहीं जाना हमें, हमें नीचे एक्चुअली नहीं जानी है, हमें नीचे नहीं जाना, हमें बस we have to calculate this area. So पहली चीज आपको क्या देखनी है,
मैं अकॉर्डिंग टू, अगर आपको अप्रोच को फॉलो करना है तो सबसे पहले आपको देखना है कि किसके बीच की एरिया निकालनी है, एंड देन आपको ऐसा एक ग्राफ ड्रॉ करना होगा, एंड देन यू हैव टू फिगर इट आउट कि जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया है वो उसकी रीजन क्या है। यू हैव टू फाइंड द required, okay, so you have to find the required reason of area, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड द रिक्वायर्ड रीजन ऑफ एरिया, कि हमें एक्चुअली जो भी कंडीशन दी हुई है, तो जो जो भी कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग जो मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया आ रहा, वो कैसे आ रहा, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड इट आउट। सो हमने जो करा कि बेसिकली जो अपना रिक्वायर्ड एरिया आ रहा, जो भी कंडीशन दी हुई है, लाइक y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड ऑल, एंड x इज इक्वल टू a एंड b, सो इट विल बी लाइक दिस रीजन जो हमने ब्लू कलर से कलर करी है, राइट। सो ये हो गया, एंड नाउ लेट्स मूव इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है ना। सो लेट मी राइट इट हियर। सो इट्स वैल्यू विल बी आवर एरिया इज इक्वल टू, we have to integrate from a to b, because we have to integrate from a to b, क्योंकि देखो एलिमेंट्री एलिमेंट मेरे पास dx ही है, क्योंकि x एक्सिस के बीच ले रहा है ना, सो आवर एलिमेंट्री एलिमेंट भी dx, सो आवर एरिया इज इक्वल a to b f of x dx, right? Okay, now the second case, I mean b part, if our graphs look like this is x axis, this is y axis, and let us assume our f of x graph is actually lies below the x-axis, and still this is our x is equal to, let me make it a straight line. So let us suppose this is our, like let us suppose this is our x is equal to a line, and this is our x is equal to b line, right? This is our x is equal to a line, this is our x equal to b line. So the condition is same. We have to find the area bounded by the y is equal to fx and the x-axis, and the straight lines x is equal to a and b. So let me try to, what I have to find first. I have to find the required region of the area according to the given condition. So what is our given condition के according जो region आ रही है वो यही region आ रही है ना, ये है मेरे पास y is equal to fx curve, and this is our actually region of okay, so this is our region of basically required region of area, right? So what you have to do here now our area is नथिंग बट, देखो डिफरेंस, इफ यू कनेक्ट इट विद द डेफिनेट इंटीग्रल पार्ट, तो हम क्या करते थे, वहां पे जो होता था कि जो वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल आती थी वो अपन सब्ट्रैक्ट करते थे, कि एक्स एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव, करते थे ना। बट यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे होंगे कि जस्ट वी हैव टू राइट इट हियर, mod of fx dx from a to b, राइट। अपन को बस यही यही करनी है। अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या कर रहे होते थे कि वी जस्ट टेक दी जो भी एरिया अपन, मतलब जो भी इंटीग्रल निकालते थे, तो एबव द एक्स एक्सिस पॉजिटिव लेते थे एंड बिलो द एक्स एक्सिस नेगेटिव लेते थे, राइट। बट यहाँ पे हमें बस क्या करनी होगी कि हमें बस a to b करना है एंड f of x dx, बट यहाँ पे बस मॉड लेना है, बिकॉज एरिया इज नेवर नेगेटिव। लेट मी रिमार्क हियर, ये ऐसा मॉड क्यों ले रहे हैं, बिकॉज देखो डेफिनेटिव हमने क्या पढ़ रखी है कि अगर एक्स एक्सिस के बिलो मेरा ग्राफ लाइज कर रहा, एक्स एक्सिस के नीचे मेरी ग्राफ लाइज कर रही है, सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू जस्ट राइट नेगेटिव हियर, बट लेट मी रिमार्क हियर, एरिया इज नेवर बीन नेगेटिव, एरिया बेसिकली कभी नेगेटिव नहीं होगी ना, उसकी मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती है। कभी सुना है कि अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज माइनस एक्स स्क्वायर यूनिट, ऐसा कभी नहीं सुना ना। इट्स वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो एरिया इज नेवर नेगेटिव, ओके। सो यू हैव टू पुट mod here,
Okay, and let me write here the third part, which is if our, let me suppose that if our graph, which is something look like, the graph of fx is something look like this, and this is actually our y is equal to fx graph. Okay, so and there is something x is equal to a line. Okay, so there is something x is equal to a line. Let me write it here. And there is something x is equal to b line. And you have to find, and this is our graph. So first you have to find the area of required region. Okay, so what I have to do, I have to just, this is our x is equal to a line and this is our x is equal to p line. So, and this is our x-axis. So let me write it here first, mark the x-axis and y-axis. So this is our x-axis and this is our y-axis. So what I have to do, now first we have to find the area of required region, right? First I have to find the area of required region. So what I have to do here is, see, this is our x is equal to between and x-axis के बीच की graph है. So this is our required region, and let us suppose the value like f of c is 0 and the c lies between a and b. ठीक है, ये ऐसा मैं ले लेता हूँ, बीच में c पे कहीं 0 हो रहा and value of function 0 हो रही ना, यहाँ पे f is equal to 0 है. So let us go, and this is our region. So first we have to find the area of required region. पहले तो region find करो कि कौन से region में हमें area को निकालना है. So this is our, this two region. This is region 1 and this is region 2. Now the things is, what I have to do here. Now what I have to do here is, our area is, look, in first region, let us call it as first region. And let us call this one as second region. So पहले मैं एक बार इसको फिर से कराने की कोशिश करता हूँ. Then I am writing the final area here. So look at here. So look at here. In first region, and called it as A1. This region has area A1, where x lies between A to C1. A to C के बीच में x है. ठीक है. तो in this region, graph of fx lies between, graph of fx lies between, किसे किसके बीच lies कर रही है? Below the x-axis. Lies below the x-axis. Below the x-axis. So what I have to do here, I have to do here is the A1, which is nothing but mod of f of x dx from A to C. Now we are talking about the in second region. So it in second region, which is called as A2. So the graph of x lies above the x-axis. So it usually positive, right? So I have to do no change here, and our A2 is equal to, we are integrating from C to B and f of x dx. So our net area will be A1 plus A2. So our area will be mod of fx dx from A to C and plus C to B fx dx. Right. So this is our net area. Now you can't apply the, because this function is obviously continuous between A and B, but you can't write like this equal to integration of A to B fx dx. No, this is wrong. This is wrong because we have to calculate the area, and the graph is lie below the x-axis in region A to C, right? So we have to put mod here. In when you finding the value of integration, then it will be considered as A to B integration fx dx. But still we are finding the area. So you have to, anyhow you have to draw the graph. ग्राफ बनाने इज कंपल्सरी. यू कैन नॉट डू डायरेक्टली. आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, आपको फिगर बनानी होगी, है ना. आपने फिगर बनानी ही होगी, क्योंकि विदाउट फिगर बनाए आपको नहीं पता है कि किस रीजन में ग्राफ ऊपर लाइज कर रही है, किस रीजन में ग्राफ नीचे लाइज कर रही है.
एंड इस पे बहुत बड़ा फैक्टर डिपेंडेंट है, बिकॉज इफ आवर ग्राफ लाइज बिलो द एक्स एक्सिस, सो वी हैव टू टेक इट इन अ मॉड, राइट? सो लेट मी put it in a box, so you have to consider it. So this is our first case, which is we are calculating the area bounded by the curve y is equal to fx with x axis, जिसमें हमने 3 केसेस पढ़ी। पहला केस था हमारा कि अगर अपनी एरिया जो है वो एक स्ट्रेट लाइन x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b है, के बीच में है, देन अगर अपना ग्राफ ओनली लाइज एबव द एक्स एक्सिस, सो वी हैव टू डू डायरेक्टली, कोई मॉड वॉड नहीं लगेगी, बिकॉज x is positive and fx is also positive, and when the a will be like that when graph lies below the x axis, and that's it, right? So now the third thing is if the graph lies above and below the x axis as well, so what we have to do, we have to take that from, first take the graph lies which above the x axis and below the x axis partially, right? We have to, हमें मतलब हमें जो है ना अलग अलग लेनी है, एक साथ नहीं ले सकते। समझ में आ रहा? हमें अलग अलग लेनी है, एक साथ नहीं ले सकते। That's it. Now let's move on to the next. Now we are going to look something new, which is actually look like the fourth case. There is one more case, right? So this case is actually important because तो देखो यहाँ पे एक चीज है कि सबसे पहली चीज, किसी भी तरीके का अगर मुझे एरिया फाइंड करनी है तो मैं कुछ स्टेप्स को फॉलो करने होंगे। जो मैं स्टेप्स आपको बोल रहा हूँ आप उसको ध्यान से सुनो। पहले आपको जो भी दी हुई कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग फिगर बना लो। जो भी कंडीशन दी हुई है, देखो मैंने क्या करा, मैंने जो भी कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग मैंने फिगर बनाया, एंड देन आई हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन। जो भी रिक्वायर्ड रीजन का मुझे एरिया निकालना है उसको पहले आप नोट करो कि मुझे लाइक इस रीजन की एरिया निकालनी है, एंड देन यू अप्लाई द फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको ग्राफ बनाना ही बनाना है। विदाउट ग्राफ बनाए, विदाउट फिगर बनाए आपको नहीं पता चलेगा कि कहाँ पे ग्राफ ऊपर लाइज कर रही है, कहाँ पे ग्राफ नीचे लाइज कर रही है। सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द next case, which is something look like case number 4. So let me write it here. Area bounded by the lines x is equal to a and x is equal to b, and the curve y is equal to f of x and y is equal to g of x will be, है ना? So अब मैंने क्या कहा, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दिया। अब यू हैव टू ड्रॉ दिस ग्राफ एंड ट्राई टू एनालाइज इट कि हो क्या रहा है यहाँ पे, है ना? सो लेट्स ड्रॉ इट्स ग्राफ। सो वी हैव टू फाइंड द area bounded between the line x is equal to a and x is equal to b. Let me draw it straight. Okay, so this is our x axis, this is our y axis. Okay, and this is our latest line, this is our x is equal to a line, and this is our x is equal to b line. Suppose that this is our x is equal to and this is our x is equal to now, and the curve y is equal to f. Suppose that our y is equal to curve is something look like that. We don't know. I just assume that our curve something look like that, look like this, and y is equal to gx. Suppose our curve something look like, okay, something look like this, y is equal to gx, and what I have to find, now we have to find, now हमने ग्राफ बना लिया, अब हमें पता करनी है required region. So look at here, we have to calculate the area between x is equal to a and b. तो एक तो ये मिल गया कि अपन को इसके बीच की एरिया चाहिए। Now y is equal to fx and y is equal to gx के बीच में, तो what I am trying to do, y is equal to fx यहाँ हो गया and y is equal to gx यहाँ हो गया, तो इनके बीच में चाहिए। I mean ये this is my required जो है ना रीजन है। Now question arises in your mind कि how we calculate this area। हमें y इक्वल टू एफ एक्स का एरिया निकालने आता, अगर पूरी एरिया पूछता यहाँ से यहाँ तक की, देन वी कैन कैलकुलेट a इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम a टू b, जो हमने पहले कर रखी है यहाँ पे। ये मतलब बेसिकली यही एरिया होता है ना।
नाउ हाउ टू फाइंड आउट द एरिया बिटवीन टू कर्व्स, दो कर्व के बीच के एरिया कैसे निकलेगी? सो हम कुछ तो दिमाग लगाएंगे बाय यूजिंग फर्स्ट थिंग्स. So this is our required region. Now let's move on to the area part. So what I'm trying to do here, area, net area. So in net area thing, so look at here. Look at here. Uh, so the net area will be if I find the area between the graph y is equal to fx and x-axis. So what it will be? It will be nothing but we are integrating from a to b fx dx. And if we subtract this area, let me try to illustrate you, then we will get to the answer. A to b gx dx. So our area will be a to b f of x minus g of x dx. So this is our net area. Now I'm trying to elaborate you. मैंने ये लिखा कैसे है? So आपको चीजें समझ में आ जाएगी. So let me tell you. Okay. देखो यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ कि मेरे को निकालनी है ब्लू कलर वाली एरिया. Now what I'm trying to do here is take the red color which is finding the area between fx and the x-axis. ये जो ये पूरा है, ठीक है, मैं थोड़ा सा ही बना रहा हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाए. मतलब इसके लिए यहाँ से यहाँ तक एरिया. And the next thing is we are finding the area between graph gx and the x-axis. I mean this area which is green, right? So our net area will be green area minus, sorry, red area minus green part. So we'll get the blue part. I hope this thing clear to you. मैंने क्या करा, y is equal to fx and x axis के बीच की एरिया निकाली, which is actually the red part. जो मैंने रेड कलर से दिखाई है ये पूरी एरिया, ये सभी जगह है. मैं अब सब जगह नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो हेक्टिक हो जाएगा ना, देखने में सही नहीं लगेगा. सो मैं बस साइड में दिखा दिया कि यहाँ से यहाँ तक एरिया कंटिन्यूअसली a to b तक red part. And when we calculate the area between the graph y is equal to gx, which is like this one, and then we subtract it from and then the area calculate between the x-axis. So what we do, we just subtract it from fx minus gx. So we get the area of the region which is colored by blue, right? I hope you all understand what I'm trying to say, right? So this is our required area. ये था चौथा केस. Let's move on to the fifth case. इसी की पार्ट भी देखते हैं. यहाँ पे तो fx हमने कुछ ऐसा ले लिया था. अगर अपनी fx इसी की मैं बात कर रहा, द सेम वन, राइट, मैं एकदम सेम वन की बात कर रहा, इसमें कुछ अलग नहीं है. इफ आवर दिस इज आवर x एक्सिस, दिस इज आवर y एक्सिस, एंड मान लो कि अगर अपना fx कुछ ऐसा हो गया, जैसे y इज इक्वल टू fx. पहले तो x इज इक्वल टू ab की लाइन में बना लेता हूँ. So this is our x is equal to a line, this is our x is equal to b line. फिर मान लो gx कुछ ऐसा हो गया, पॉसिबिलिटी तो है ही. एंड दिस इज आवर कुछ सी पॉइंट जहां पे ये दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो पहला चीज तो यही है कि हमें ग्राफ बनानी होती है. एंड द सेकेंड थिंग इज वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन. किस मतलब रीजन तो फाइंड करना होगा ना कि किस रीजन में हमें एरिया निकालनी है. ऐसे मतलब क्या ही बोलूंगा कि कैसे एरिया निकालनी है, कहाँ एरिया निकालनी है. सो यू हैव टू फाइंड द कि रिक्वायर्ड रीजन हमको फाइंड करनी होगी. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू the things that we have to calculate. So now on, this is our required reason. So let me show you here how it's look like. So this is our required reason, because हमें fx and gx के बीच and x equal to a and b के बीच निकालने हैं. So एक रीजन ये हो गया, and the second reason is this one. देखना बाहर नहीं जाएगा, x इक्वल टू बी के बाहर नहीं जानी चाहिए क्योंकि x इक्वल टू बी तक ही हमें निकालनी है, तो उसके आपको बाहर नहीं लेके जानी है. ठीक है, सो दिस इज द थिंग. नाउ अब क्या करनी है. सो लिखते हैं. तो यूजिंग द फर्स्ट पार्ट, मैं पहले पार्ट को यूज करके लिख देता हूँ, है ना. तो यूजिंग द एबव पार्ट, अब देखो अपने को रिक्वायर्ड एरिया रीजन मिल गया.
अगर हम बात करते हैं अब इस रीजन को मैं कहता हूँ कुछ, तो इसकी एरिया A1 है और इसकी एरिया A2 है। तो अभी हमने देखा है तो नेट एरिया विल बी नथिंग बट A इज इक्वल टू A1 प्लस A2, राइट। तो सो जो A1 है उसमें क्या है कि fx gx ऊपर है fx नीचे है। सो व्हाट आई एम गेटिंग हियर g ऑफ x माइनस f ऑफ x dx, and we are integrating it from A to C plus we have to integrate from C to B, but what I have to do here, I have to just write fx minus dx, because this time fx is above the dx, so we have to actually subtract this a whole area minus this small area to get the required area, right? So this is our formula. I hope this is clear to you. Okay, so this is our actually last case for x-axis for the area bounded by the curve y is equal to fx with the x-axis. So now अब हमें क्या करनी होगी, अब हम देखेंगे क्या एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x इज इक्वल टू एफ वाई विद द वाई एक्सिस, ठीक है। और इसमें तो मतलब सेम ही चीज होगी, बस फॉर्मूला कैसे लिखनी है वो मैं दिखा देता हूँ तो आप लोग कर लोगे। So let me write here the second one, area bounded by the curve x is equal to fy with y-axis, right? So we have to calculate this area. Area bounded by the curve x is equal to fy with the y-axis. Okay, so this is our first case. अब देखो ये सारी मैंने करा रखी हैं, सो मैं आपको बस डायरेक्टली लिख देता हूँ तो आपको तो उससे समझ में भी आ जाएगा। दिस इज आवर x इज इक्वल टू fy ग्राफ, and let us suppose this is our y is equal to a and this is our y is equal to b, and so the required region is, okay, let me write the x and y axis as well, otherwise वो दिक्कत हो रही है। Okay, this is our x axis and this is our y axis. So now the required region of area is this region. Okay, so what its area will be, so its area will be nothing but area is equal to integration from a to b f of y dy, ठीक है। नाउ बी पार्ट हमने क्या करी थी, हमने वही करा था। लेट मी मेक इट इन अ क्लियर वे, something like y-axis, this will be something like x-axis, and this time our graph lies between negative of y-axis. Let us suppose this is our graph, x is equal to f of y, and it lies in the negative side of y-axis, right? So what I have to do, this is our y is equal to a line, let us suppose. Okay, y is equal to b line. Okay, no problem. This is equal to y is equal to a line. This is equal to y is equal to b line. No problem, right? So कहीं अपन कहीं से भी कर सकते हैं. So first try to find it out the area of region, required region. So our area of required region is this one. So let me write it here in a good way. So this is our area of required region. So what I have to do just here, our area will be nothing but, हम आप क्या कर रहे थे, माइनस लगा देते, बट यहाँ पे अपन को क्या करना होगा, वी हैव टू जस्ट राइट द मॉड सिंबल. So let me write it here, mod of, we are integrating from a to b f of y dy. Put the mod here, and this is our final solution. Okay, so let's move on to some problem, because हमने तो केसेस काफी है, ये जितने भी देना है ये सारी थ्योरी पार्ट थी, तो आपको होपफुली थ्योरी पार्ट समझ में आ गया होगा। देखो अगर चीजें समझ नहीं आ रही ना, तो तब तुम्हारे इंटीग्रल चैप्टर में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं यहाँ कुछ भी नया नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको जो भी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ाया था उसी की लॉजिक यूज करके बस केसेस अलग अलग करके दिखा रहा हूँ। इसमें बस उल्टा होता है, वहां पे अगर एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ लाइज हो जाती है सो वी टेक द नेगेटिव साइन, बट यहाँ पे अपन क्या लेते हैं, मॉड लेते हैं। उसकी भी मैंने रीजन बताई,
बिकॉज एरिया इज नेवर बी नेगेटिव। यहाँ पे लिख भी दिया है रिमार्क में, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता है। एंड फिर अलग अलग टाइप्स की ग्राफ लेके मैंने बस केसेस समझाई है। ठीक है, तो ये बस एक एप्लीकेशन है। आपको एप्लीकेशन पढ़ने के लिए थ्योरी आनी चाहिए, जिसकी भी आप एप्लीकेशन पढ़ रहे हो। वी आर एक्चुअली डूइंग द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, तो आपको इंटीग्रल्स आनी चाहिए। अगर कुछ समझने में दिक्कत हो रही है तो, क्योंकि ये केसेस है ना, यहाँ पे मैंने कुछ नया नहीं पढ़ाया है, यहाँ पे बस उसकी एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ मैं। तो अगर एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है देन इट विल बी फाइन, बट अगर इंटीग्रेशन समझने में प्रॉब्लम हो रही है, सो यू हैव टू गो टू द प्लेलिस्ट ऑफ indefinite and definite integral. So let me take the example and try to basically tell you how to implement this theory part. So let me take the example, which is something look like find the area bounded by y is equal to x square minus 3x plus 2 and x-axis from x is equal to 1 to x is equal to 2. Okay, so you have to find the area between the curve y is equal to x square minus 3x plus 2 and x-axis, and from x is equal to 1 to 2. So हमने क्या बताया कि आपने पहले क्या करनी है, पहले ग्राफ बनानी है, जो भी दिया हो उसका फिगर बनाओ। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू, एनी हाउ यू हैव टू डू, और कोई वे ही नहीं है। So first draw the y is equal to x square. Basically it's a quadratic equation. I hope you'll all know how to draw this. So let me draw it directly. AOD या फिर फंक्शन में आपने पढ़ रखी होंगी, तो आई एम नॉट गोइंग लाइक हाउ टू ड्रॉ द कर्व। अगर उस पे करूंगा तो एक स्पेशल लेक्चर ले लूंगा, अगर आपने कहा तो, कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो उसकी भी रूल्स होती हैं। आपने मे बी AOD में पढ़ रखी होगी या फिर फंक्शन में। तो अगर नीड हुई तो मैं एक अलग से लेक्चर बना दूंगा, क्योंकि ये पूरी लेक्चर ले लेगा कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। सो लेट मी टेक इट इन अ डायरेक्ट वे, कैसे इसकी ग्राफ होगी। इट विल समथिंग लुक लाइक दैट। एंड ये जो वैल्यू होगी वो, लेट मी इसको थोड़ी साफ से करते हैं ना। दिस इज आवर y एक्सिस एंड दिस इज आवर एक्सिस y is equal to 2. This is 1, this is 3. 1 and this is 2. Okay, and this is 0, 0. So now we have to calculate the area bounded by this curve and the x-axis. तो देखो बाउंडेड है ना, तो एक्चुअली एंड द x इक्वल टू 1 to 2. ओके, मतलब x इज इक्वल टू 1 ये लाइन हो गया, एंड x इज इक्वल टू 2 ये लाइन हो गया, मतलब इसकी बीच के एरिया। सो नाउ पहला काम क्या था ना, पहला काम हमारा ये था कि हमें ग्राफ बनानी थी। हमें जो भी दी हुई है कंडीशन उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाना था। हमने फिगर बनाया, राइट, हमने फिगर बनाया। नाउ जो दूसरा काम है, कि हमारा दूसरा काम क्या है, कि एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन लिखनी है। सो दिस इज आवर एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, एक्स एक्सिस एंड एफ एक्स के बीच की, एंड बिटवीन एक्स इक्वल टू 1 to 2 के बीच में। नाउ द एरिया विल बी nothing but we have to integrate it from, but now here we have to put mod because our graph lies below the x-axis. So this case is similar to this one. Let me show you this one. So we have to put mod here, and then we have to take from 1 to 2 and x square minus 3x plus 2. Now you all know this, how to integrate this. We already learned this thing in integral chapter. So integrate it, so it will be x cube by 3 minus 3 by 2 x square plus 2x, and we have to put the limit 1 to 2. So insert the upper limit first. So what we get, 8 by 3 minus 3 by 2 into 2 into 4 plus 4, and then minus 1 by 3 minus 3 by 2 and plus 2. So when we solve this, what we get? We get 8 by 3 minus 6 plus 4 minus 1 by 3. And this will count as 1 by 2 because minus plus 1 by 2. So when we solve this, what we get? 7 by 3. And this will be like minus of 2 and plus 1 by 2. So its answer will be something look like. And you have to put the also as mod. So when you put the mod, you will get the answer as 1 by 6 square.
So this is the thing that अगर तुम बिना without mod इसको solve करोगे ना, so this will come out as a negative value, right? So you have to take this thing in mind. I hope this thing clear to you. So this is the thing कि हमें यहाँ पे mod लगानी थी, because क्योंकि अपना जो ग्राफ था ना वो बिलो दी एक्स एक्सिस लाइज कर रहा था. एंड सेकेंड थिंग आपको पता होना होगा, देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है बाउंडेड. इसको जरा समझते हैं. लाइक अपना जो ग्राफ आया वो कुछ ऐसा ग्राफ आया. देखो ये साइड जो ग्राफ का है ये ओपन साइड है ना, ये साइड जो है ना ये बाउंडेड है, बट ये साइड जो है ना ये क्या है, ओपन साइड है. ओपन साइड कहने की मतलब है कि ये अगर मैं लाइक कहूँ कि एक्स इक्वल टू ए एंड बी के बीच के एरिया निकालो और बाउंडेड नहीं लिखूं तो कैसे निकालोगे? ये तो इनफाइनाइट एरिया है ना फिर तो. देखो कहाँ तक, अगर बात कर दूं कि मान लो ये एक ऐसा पाइप है, इस साइड भी ओपन है एंड इस साइड भी ओपन है, फाइंड इट्स एरिया. और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बस ये पाइप ऊपर तक चलते जा रहा था एंड आई एम सेइंग फाइंड इट्स एरिया. सो व्हाट यू से, इट्स एरिया विल बी इनफाइनाइट. इट्स एरिया विल बी इनफाइनाइट. क्यों? क्योंकि देखो ये साइड तो लेंथ तो फिक्स है, इट्स फॉर्म एन रेक्टेंगल, राइट? ये एक रेक्टेंगल बना रहा एंड रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, लेंथ इनटू विड्थ. बट इसकी देखो ये जो विड्थ है वो तो फिक्स है, इट विल बी बी माइनस ए. बट लेंथ क्या है, लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है, वो तो चलता ही जा रहा ना, ओपन है, दोनों साइड ओपन है, इट विल बी इनफाइनाइट. So we'll get the area as infinite. I hope you'll all understand this, what I'm trying to say. Right, so let me erase it here and try to move on to the next problem. I hope it will be continue. Okay, it will. Now, our next problem is something look like question number 2. Find the area bounded by y is equal to x square, y is equal to 0, and x is equal to 1 and x is equal to 2. Okay, so y is equal to 0 is basically x axis. You all know this, na? This statement is nothing but x axis. Okay, देखो ये मेरे पास है x axis and ये है मेरे पास y axis. ठीक है, तो ये जो लाइन है ना इसमें तो y की, ये जो लाइन है इसमें तो y की वैल्यू 0 ही होगी ना. So अपन x axis ना लिख के sometimes we also write y is equal to 0. I hope you'll all understand this, what I'm trying to say. So this is our question. Now it's on. First, what you have to do? First, you have to draw the graph of the function. So draw the graph of the function. So how our graph look like? Y is equal to x square. It's something look like this. ये ग्राफ बनाने आनी चाहिए. Now कह रहा है ये कि y is equal to x square ये हो गया and y is equal to 0 के बीच की निकालनी है, मतलब x axis के बीच की निकालनी है हमें, and this is our y axis. And between x is equal to 1 and 2, so let us suppose this is our x is equal to 1 line and this is our x is equal to 2 line. चलो भाई फिगर तो हमने ड्रॉ कर लिया. नाउ इट्स टाइम टू फाइंड द रिक्वायर्ड रीजन. सो रीजन कौन सा है अपना, एक्स एक्सिस भी होनी चाहिए, एक्स इज इक्वल टू 1 एंड 2 के बीच में होनी चाहिए एंड ग्राफ के बीच में. तो दिस इज द रीजन. आई होप यू विल कनेक्ट मी कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. पहले ग्राफ बनाओ देन ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन ऑफ द, इसमें हमें एरिया निकालनी है. ठीक है, तो दिस इज आवर रीजन. नाउ this graph and the region lies above the x-axis, so we have to do nothing, we have to direct like required area. R is actually required area, so required area actually is equal to nothing but we have to integrate this x square term dx from कहाँ से कहाँ तक 1 to 2. So what we will get, we'll get x cube by 3 from 1 to 2. So it will be like 8 by 3 minus 1 by 3, which will be equal to 7 by 3 square unit. So this is our answer.
ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए कि हमें ग्राफ बनानी है। देखो यहाँ पे तो अभी तो अपन, ये तो लेवल 0 प्रॉब्लम है ना, ये जितने भी अपन प्रॉब्लम ले रहे हैं ना, ये सारे लेवल 0 प्रॉब्लम है। यहाँ पे अगर देखो ग्राफ बन रही है, मतलब बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ग्राफ ऊपर रहे नीचे रहे, सो वी हैव टू टेक द मॉड एंड ऑल। बट लेट अस थिंक, अगर ग्राफ, दो ग्राफ और वो दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट कर रही हो, देन यू हैव टू थिंक अबाउट इट, राइट, कि अपन कैसे अप्रोच लेंगे एंड क्या करेंगे। सो let me tell you the one more example which is actually important. Let me take the example of sin x. Okay, you have to calculate, okay, now this is actually example number third. You have to find the area between curve y is equal to sin x and y is equal to 0 and x lies between 0 and 3 pi by 2. So let me tell you the approach. What you have to do first, you have to do the, like you have to make the graph. So we all know that this is our sin x graph. This is our z 0. This is our pi, and there is our 3 pi by 2. There is 2 pi and there is pi. You all know that, right? So actually we have to calculate the area. Now go on to the area of region. So this is our area of region between x-axis and the curve up to 3 pi by 2. So one region is this, and the other region is this. So you have to calculate this actually region. So now I am named that. So this region as area A1, this region as area A2. So we all know that the required area is equal to A1 plus A2. Now start writing. So we have to integrate from for 0 to pi sine of x dx plus mod of sine of x dx from pi to 3 pi by 2. Why I put mod here? Because in region pi to 3 pi by 2, our graph lies below the x-axis. So we have to put the mod. And this question is same and based on this property, जो हमने पहले ही discuss कर रखी हैं. So let me show you the property, this property. One first property C part, है ना, exact. बस ग्राफ उल्टा है, but it's the same problem which based on like एक part ऊपर है and एक part नीचे है. Right, so we have to apply the same thing. Now what is the integration of sin x? We all know that there will be minus of cos x. You have to put 0 and pi here, plus mod of minus of cos x, pi and 3 pi by 2. And what is its value? So its value is equal to like put the cos of pi, so it will be -1, so +1 and +1. And plus the 3 pi by 2 value is 0 and pi value is -1, it will be +1. Put mod here, so it will be equal to 2 plus 1 is equal to 3 square unit. So this is the फाइनल आंसर. सो देखो ये जितने ही प्रॉब्लम अभी तक मैंने करी है, ये सारे किस पे मिलते हैं? लेवल 0 पे. मतलब जो भी आज मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई, जो भी केसेस दिखाए तुम्हें, उस पे मैंने बस एक एक दो प्रॉब्लम कराया. बट क्या इतनी ही इजी प्रॉब्लम और इतनी इजी एरिया एग्जाम में पूछे जाते होंगे? तो बिल्कुल नहीं. इसमें मैनिपुलेशन करी जाती है, लाइक इसमें चेंजेस करी जाती है, एंड देन यू हैव टू अप्लाई देन यूज सर्टेन रूल्स. लाइक हमने यहाँ पे क्या करा, डायरेक्ट फिगर बनाया, जो भी मैंने अभी तक स्टेप्स बताए थे. फिगर बनाओ, रीजन ऑफ एरिया फाइंड करो एंड देन अप्लाई द डायरेक्ट फॉर्मूला. मैंने फिगर बनाया, रीजन ऑफ एरिया फाइंड करा एंड देन डायरेक्ट अप्लाई द फॉर्मूला, और अपन को आंसर मिल गया. बट व्हाट इफ वी डिडंट हैव दिस काइंड ऑफ पॉइंट? अगर अपने पास कोई ये x की वैल्यू ही नहीं पता हो, डायरेक्टली नहीं पता हो, सो in next class we are gonna deal something. पहले तो अपन प्रॉब्लम डील करेंगे which is mostly based on level 1 and level 2. इसमें और कैसे मैनिपुलेशन करी जा सकती है with adding the
मैनिपुलेशन, राइट, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतना इजी तो प्रॉब्लम नहीं आ रहा ना एग्जाम में कि आपको मतलब सब कुछ हाथ में दे दिया, बस आपने ग्राफ ड्रॉ करनी है और आपने एरिया ऑफ रीजन लिख दिया एंड देन फॉर्मूला लगा दिया. मैनिपुलेशन. So in tomorrow's lecture we are gonna learn something new things and first तो अपन पहले तो प्रॉब्लम पे काम करेंगे लेवल 1 एंड लेवल 2 एंड देन वी सम और मैनिपुलेशन ऐड करके एंड मोर ऑन एरिया सीखेंगे. यहाँ पे एक चीज और एरिया में खास बात आती है, अभी तक तो लाइक फाइनाइट एरिया है ना, अपन एक चीज पे और बात करेंगे विच इज लाइक एरिया एज अ फंक्शन ऑफ समथिंग. ठीक है, लाइक ये तो अभी एरिया इसको कहते हैं, इस टॉपिक का नाम है वेरिएबल एरिया. तो अपन ये भी करेंगे मे बी नेक्स्ट क्लास और मे बी द डे आफ्टर नेक्स्ट क्लास, तो उस लेक्चर में कवर अप हो जाएगी. जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी अपन को वैल्यू आया है वो एक कांस्टेंट आया है. दैट मीन्स कि ये जो एरिया है वो एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहा. दैट मीन्स एरिया इज कांस्टेंट. बट समटाइम्स क्या होगा ना कि एरिया वेरिएबल होगा, लाइक एरिया इज वेरिंग एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ एक्स. सो दिस इज काइंड लाइक वेरिएबल एरिया, तो उस पर अपन डिस्कस कर रहे होंगे. So actually these are some important topic. So that's all for today's guys, and we hope कि अपन नेक्स्ट टुमारो क्लास में चीजें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि उतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं है, ये एरिया आसान है. इसके पहले वाले जो भी मैंने 8 प्रॉपर्टी पढ़ा रखी हैं तो उसको आप और अच्छे से रिवाइज करो, लाइक एस्टिमेशन ऑफ फंक्शन या फिर डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन, डेफिनेट इंटीग्रल, डिफरेंस एंड इंटीग्रेशन, वो सारी चीजें. तो that will be easy to you. Okay, so thank you very much. We will discuss in next class some level 1 level 2 problem.